Assalamu alaikum everybody. So today is our last session of STEM education of our preschool professional. This was the module 1 which we have already studied. It was a roller coaster for me as well that I enjoyed a lot while teaching you people. So let's start with the lesson number 4, final part, formulating a project-based team unit of the inquiry and design process and STEAM. Here you will learn how to design the design process of STEAM. So let's start it. The content of the course is Education Delivery Resources, Preparing a STEAM Project-Based Unit of Inquiry, Project-Based Unit of Inquiry Scheduling, Creating a Structure for your STEAM Classroom. During the project-based unit of inquiry, a variety of subjects are covered including, this is what you will be able to understand: education delivery resources, preparing a STEAM project, project-based unit inquiry scheduling, creating a structure for your STEAM classroom. During the project-based unit of inquiry, and variety subjects are covered by and including. What is education delivery resources in your mind? What the question comes in your mind? So pause the video here and write. What do you think that education delivery resources are? And then come back. Welcome back, everybody. I hope you have written as much as you can. So here I'm going to tell you about what exactly is. Planning how to combine instructional method and tools in the classroom follows the creation of your roadmap for the academic year. You can use any tool. It can be paper pen, puzzle, scissor, technology, feather, board, paper, clock, globe, bells, paint, test tubes, and anything that you wanted to use. It is critical to evaluate the kind of instruction and learning environment teachers give their students. I know it is very critical, but once you're on a track, that will be easy for you people to integrate STEAM into classroom environment if they are aware of whatever where they are de- deca- yes, if they are dictating how and what student learn. If you are going to dictating these things to them, if you are a dictator, then it will be a little difficult for them to understand. But if you are a facilitator, as I said, if you are a good teacher, an extraordinary teacher, then your road mapping, your instructional things, everything will be clear in your mind. So now pause this video here and answer this question. Is your classroom is teacher led or student led? It means आपकी classroom में teacher का hold teacher led होती है या student led होती है? So please pause this here and write how much lines if you can. It should be around 5 lines and then you can come again. Welcome back everybody. I hope you have written the answer, but I'm going to show you the difference between student led and teacher led classroom. So you can make a choice using the table below. The decision to learn is made by the student. The classroom is set up to meet the requirements of the kids. There is strong student participation and engagement, and teachers behave more like coaches, offering directions when necessary. This is how, and you can say should be the student-led classroom. The decision to learn is entirely up to the teacher. Teachers accept responsibility for what children need, and teacher-led classroom is set up to meet their needs, obligation. In this setting, learning that deviates from the teacher's agenda is frequently met the resistance or even animosity. This is called teacher-led. Now, do let me know which one is yours. Is your class student-led or your class is teacher-led? So most of the time, unfortunately, हमारे schools में teacher-led classrooms होते हैं. हम least ही bother करते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ chance दें और हम उन्हें आगे बढ़ने दें.
This is true. But from now that you people have learned so many skills with the help of STEAM, I would love you people to make your classroom student-led classrooms. And let's how you can schedule the project based of inquiry. It takes time to create, test, and reframe an idea. Here is a sample schedule for a PBL unit of inquiry that allows students to adequate opportunity to participate in the activity. Your timetabling commitments determine how much time you have available each week. This is what I have already discussed. How much information from different subjects you were able to incorporate and evaluate. This is very important. The timings and the information from the different subject you are going to incorporate. This is called cross curricular link. यानी एक सब्जेक्ट में से दूसरे सब्जेक्ट का लिंक बनाना, उसे इवेल्युएट करना, उसे इनकॉर्पोरेट करना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस करिकुलर लिंक. So now look at this, week -2 turning in, यानी आपका जो स्टार्टिंग वीक होगा, प्री वीक जिसे हम कहते हैं, experience other class or school celebration of learning, initial reflection effectiveness of observed presentations, ट्यूनिंग इन. ये अभी आपने जब स्टार्ट करना है ना, मतलब 2 वीक तो आपने जैसे पायलट वीक होता है उसकी तरह काम करना है, उसमें ट्यूनिंग लेकर आनी, डीपर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऑब्जर्व प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पेरेंटल इंफॉर्मेशन हैंडेड आउट होना चाहिए. देन जब आपका मेजर वीक स्टार्ट हो, क्वेश्चन करें, चूज करें प्रॉब्लम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचर वर्सेस स्टूडेंट वर्सेस पेरेंट. आपके पास पेरेंट्स का भी साथ साथ बहुत बड़ा रोल होना चाहिए जिसमें बच्चे के लिए वो कोऑपरेट करे आपके साथ. फाइंड आउट करें, थर्ड सेकंड वीक सेलेक्ट प्रॉब्लम इशू, रिसर्च द प्रॉब्लम एंड लाइंस ऑफ इंक्वायरी करंट सिचुएशन. जो हमने पहले कर चुके हैं कि हमने अपनी इंक्वायरी को कैसे डील करना है, तो हम इसे अपने टाइम टेबल पे कैसे हमने सेटअप करना है. गोइंग फर्दर, रियल फाइनलाइज रिसर्च एंड सॉलिडिफाई लाइंस ऑफ इंक्वायरी, इनोवेट डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस. आप वर्कशॉप नहीं कंडक्ट कर सकते, कोई बात नहीं, आप डिजाइन थिंकिंग बच्चों में डेवलप करेंगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने बताना है टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिजाइन थिंकिंग, नो, डिजाइन थिंकिंग के जरिए आप उन्हें पढ़ाएं. मेकिंग कंक्लूजन, मेंटोर and other student giving feedback, student designing, testing and refining prototypes. Making conclusions, again the week 5 workshop on delivering effective presentation, find display ready prototypes. यानी आपके पास पूरा आपने एक महीना लिया है, एकदम से नहीं हुआ है, आप पूरे एक मंथ में लेकर चलें एक प्रोग्राम को, एक सब्जेक्ट को. आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट टीचर है तो ऑफ कोर्स आपके पास साइंस ही होगा, कंप्यूटर ही होगा, इंजीनियरिंग ही होगा, आई मीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करेंगे. आर्ट है तो आर्ट टीचर होंगे, लिटरेसी है तो लिटरेसी टीचर होंगे. बाय द 6th week, taking action, celebrate of learning with display, presentation work and reflection of the process. जब आपको लग जाए कि yes मेरे स्टूडेंट्स दे आर एबल टू वर्क ऑन इट, तो उनका डिस्प्ले करवाएं, उनको आप असेंबलीज में उनके पोस्टर, प्रेजेंटेशन या उनके जो भी वर्कआउट्स हैं, वो आपके पास हैंड्स आउट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, वो डिस्प्ले करवाएं. सो क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर योर स्टीम क्लासरूम, ये बहुत जरूरी है. द सेटअप ऑफ स्टीम क्लासरूम इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी क्लियर गाइडेंस, क्योंकि स्टीम क्लासरूम के लिए आपको जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही हो जिस पे आप करें. देर आर नॉट एनी स्पेसिफिक और नेसेसरी स्टेम सेंटर्स और फैसिलिटीज, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था स्टेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5, स्टीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट. तो एक सेंटर इसके लिए हमें अलॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. इट कैन बी एनी, आप इसमें अपनी चॉइस करते हैं ताकि आप इसे अपने तरीके से, अपने क्लासरूम के तरीके से, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के तरीके से आप इसे बना लें. You can dedicate a maker space, studio or lab in the classroom by making sure you have the supplies required to complete STEAM classes or projects. ये वही बात है कि आप एक कॉर्नर अगर नहीं आप सेट कर सकते, ये उन क्लासेस के लिए होता है जहाँ बहुत स्पेस होती है. अगर है तो आप एक कॉर्नर सेट कर दें, अगर नहीं है तो आप बच्चों को जब आपने अपने स्टीम प्रोजेक्ट्स करवाने तभी आप उनको सप्लाईज प्रोवाइड करें. Hard tools, robotic, 3D printers, softwares, and other devices are absent. The key or to thinking is 21st century skill. Combine ideas,
to make use what is already around you. See, as I said कि आप as a teacher ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ये चीजें नहीं है तो I'm not able to do that. आपने वो करना है जो चीजें आपके पास है. Materials can even be a recycle item like glass, paper, cardboard, metal, plastic, tires, textile, etc. जो मैंने आप लोगों को शुरू दिन से एक ही बात कहती हूँ. Build manageable lesson projects and goals. Keep your attention on the here and now while keeping an eye on the big picture to help you gauge the effects of your everyday action. जब आप इन चीज़ों पर आ जाएंगी ना, जब आपका फोकस सिर्फ स्टूडेंट की ग्रोथ ऑफ लर्निंग पे रहेगा, then you're not able to think like the materialistic person कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है. आप एक ऐसी टीचर की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे कि what I am having right now. Okay? During the project-based unit of inquiry, a variety of subjects are covered, including speaking in public using infographic with digital media, online research techniques, writing, gathering and analyzing data, coordination and cooperation. This is included in STEAM. आपने ये नहीं सोचना प्रोजेक्ट बेस में ये सारी चीजें भी आती हैं. प्रोजेक्ट बेस का मतलब जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा था, इट्स नॉट कि सिर्फ प्रोजेक्ट मेकिंग करनी है. प्रोजेक्ट बेस का मतलब है इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए. So now let's see the design thinking A5 stage. Emphasize, define, ideate, prototype, test. In emphasize, student will be able to investigate, research and ask questions from a teacher, from a facilitator and so on. Then they will start defining, stating the problem challenge as clearly as possible. जब भी आपको कुछ अपना idea type कर रहे हैं, define कर रहे हैं, then you should be there to help them. To make their ideas more clear. आपने उनसे पूछना है, अगर जो वो कह रहे हैं उनको सुने, उनको आप कहें yes this is right but it you can do it more better by doing this. अगर वो सही नहीं बोल रहे तो आप बोले okay I think you should think something else because I think it's not linking up with it but I'm appreciating you that you have answered already. Okay, then ideate, developing multiple idea for solution. As a teacher you should also implement these design thinking in your lesson plans also. Prototype, develop semi-work models. Testing, testing and improving the prototype. Repeat the same steps as many times as possible until you solve the problem. ये नहीं है कि आपने एक दफा कर लिया डिजाइन थिंकिंग को कर लिया और आपने कहा कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा. जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. This is called design thinking. 5 stages. This is called design process. सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आई, उसे आइडेंटिफाई करें, constrain on your solution, time, money, material and success criteria. फिर multiple solution आएंगे, then select, then prototype, test, iterate and communicate and then define, and this is what the cycle should go on. This is what the work should look like. I hope this is clear to you people. Now this is the engineering design process. ये आपको असाइनमेंट में करना है, मैंने वहां मेंशन किया हुआ है तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना इसको बना सकते हैं इजीली. The engineering design process. Identify the problem, explore, design, create, try it out, make it better. Test your solution, research, and rest of the things are direction. Look at the description in the lower left corner, this corner. Then test your solution and decide which one goes with the step of the engineering design. Write the appropriate in this and write. यानी आपने यहाँ से चूज करके सब यहाँ लिखने हैं एंड देन आपने पोस्ट करना है. ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद आपको मैंने आपके असाइनमेंट में भी डिजाइन प्रोसेस दिया हुआ है. आपने जब ये फिल कर लिया करेक्टली देन यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ओन. So thank you so very much. This was our last session and I hope you enjoyed it a lot. See you. Allah Hafiz.